Hi guys, welcome back to our channel. Now, in the previous video we had discussed about the financial markets, right? हमने उसमें डिस्कस किया था कि financial markets का structure क्या होता है. The basic division of the financial markets is they're divided into money markets and capital markets. In this particular video we are going to discuss about the money markets, right? Let's get into the details of it. See, money markets basically it's a market for financial assets which are a close substitute to money. ठीक है, तो यहाँ पे आपको कैसे इंस्ट्रूमेंट्स मिलते हैं? Basically you trade in instruments which are easily converted to cash. Okay, the money market, its basic function is to help the monetary policy in price stability and regulating the money supply, right? अब ये कैसे होता है, we'll be discussing this in the subsequent videos. First let's focus on some features of the money market. Okay, अब सबसे पहले मनी मार्केट में आप किस तरीके के फंड्स से डील करते हैं? सो नंबर वन, वी हैव शॉर्ट टर्म फंड्स, राइट? शॉर्ट टर्म फंड्स बेसिकली इनका मतलब क्या होता है? These are the funds which have a maturity period of 1 year. Now when we talk about maturity period, this means that the amount that was invested in this particular fund by the investor, that has to be repaid within a period of 1 year, right? तो जो प्रिंसिपल अमाउंट जिसको आप बोलते हैं, वो जो इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट किया था ये इंस्ट्रूमेंट्स में, दैट विल बी रिटर्न्ड बाय द institutions or the government or whatever instrument you have invested in, depending on that, वो आपको रिटर्न करेंगे कितने टाइम में? 1 साल के अंदर, right? So those type of funds are treated as short term funds. Now when we talk about funds, यहाँ जितने भी instruments हैं ये किस टाइप के हैं? See, these are debt instruments. Okay, यहाँ पे जो instruments हैं इनका जो risk factor है, इन्वेस्टमेंट का जो रिस्क फैक्टर है, दैट इज़ वेरी लो. नाउ व्हाई इट इज़ लो? सी, वन बेसिकली बिकॉज मोस्ट ऑफ देम आर गवर्नमेंट रिलेटेड. अब जो भी चीज़ें गवर्नमेंट रिलेटेड होती हैं, अगेन रेगुलेटेड होती हैं, उसमें रिस्क कम रहता है. ओके, द रिस्क, अच्छा यहाँ पे रिस्क, किस रिस्क की बात हो रही है? वी आर टॉकिंग अबाउट द रिस्क ऑफ रीपेमेंट, प्रिंसिपल रीपेमेंट की बात हो रही है कि अगर आपने किसी चीज़ में इन्वेस्ट किया है वो पैसा आपका डूब नहीं जाएगा. क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो इंस्ट्रूमेंट्स में आप डील कर रहे हैं दोज आर मोस्टली रिलेटेड टू द गवर्नमेंट और एनी से क्रेडिट, वेल क्रेडिट रेटेड इंस्टीट्यूट. ओके, सो इसलिए रिस्क कम है. नाउ दीज इंस्ट्रूमेंट्स आर ऑल्सो अनसिक्योर्ड. अच्छा, सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड क्या होता है? बेसिकली सिक्योर्ड इंस्ट्रूमेंट्स वैसे होते हैं जिनमें आपको कोई कोलैटरल मिलता है. Having a collateral basically is a security for the investor. Unsecured instruments कौन से होंगे? ऐसे instruments जिनमें कोई भी collateral या security नहीं है. तो मोस्टली ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनमें आपको कोई कोलैटरल या सिक्योरिटी नहीं मिलता, राइट? अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ़ वी हैव टू डिफाइन कि कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं, तो यहाँ पे देखो, वी हैव ट्रेजरी बिल्स, वी हैव कमर्शियल पेपर, right? We have commercial bills. Apart from that, if we talk about any other instruments, we have call money market. ठीक है, उसके अलावा we have certificate of deposit. इस पे भी we'll be making a separate video, don't worry about it. ठीक है, अच्छा, ये एक ऐसी मार्केट है which is regulated मतलब properly controlled by the different regulatories. RBI, SEBI, ये सारी जो institutions हैं, regulatories हैं, they help to control and monitor the functions or the transactions happening in this particular market, right? अच्छा, जैसे कि हमने इनिशियली डिस्कस किया था, दिस मार्केट हेल्प्स यू टू फुलफिल द बेसिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी. आगे बढ़ते हैं. दिस हेल्प्स यू टू एनहांस लिक्विडिटी. अब देखो, जो फंड्स यहाँ पे हैं, जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वी टॉक्ड अबाउट, दीज आर ईजीली कन्वर्टेड टू मनी, राइट? अब आप इजीली इनको कन्वर्ट कर सकते हो शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए. नेचुरली जो लिक्विडिटी फैक्टर रहेगा वो यहाँ पे ज़्यादा रहेगा. दीज इंस्ट्रूमेंट्स डू नॉट हैव अ सेकेंडरी मार्केट. ऐसा नहीं है कि आपकी सेकेंडरी मार्केट इज़ दुकान, राइट? द ट्रांजैक्शंस दे हैपन ओवर फोन और थ्रू से योर ऑनलाइन मोड्स. Okay, now here in this particular market there is no broker involved,
right? And when we talk about the money market, it is basically a need based market. तो यहाँ पे जितना डिमांड या सप्लाई होता है मनी का, उस बेसिस पे इंस्ट्रूमेंट्स ट्रेड होते हैं. So this was all about the basic features of your money market. अब मनी मार्केट के स्ट्रक्चर पे आते हैं. Basically, it is divided into two, organized and unorganized. When we talk about organized structure, this is something which is controlled by the government, right? Anything controlled by the government or any institution has a lot of rules and regulations, has procedures, okay? यहाँ पे सब कुछ एक regulated way में होता है. So this is organized sector. And unorganized में कौन से आते हैं? Basically the segment which is not regulated, कंट्रोल नहीं हो पाता. यहाँ पे कौन से आते हैं? वी हैव इंडिजिनियस बैंकर्स, वी हैव मनी लेंडर्स, हुंडीज, चिट फंड एक्सेट्रा. ये सारी चीज़ें आती हैं अनऑर्गेनाइज्ड सेगमेंट में. अगेन जस्ट टू ब्रिंग एवरीथिंग टुगेदर, मनी मार्केट बेसिकली है क्या? इट इज़ अ मार्केट फॉर फाइनेंशियल एसेट्स विच आर अ क्लोज सब्सटीट्यूट टू मनी और विच कैन ईजिली बी कन्वर्टेड टू मनी. उसके कुछ हमने फीचर्स देखे. Right now we are moving on to understanding the different intermediaries in this particular market. Now the first one is your central bank, national bank, that basically provides you different types of say financial and banking services. और ये किसको provide करते हैं? To the country's government and say the commercial banking system as well. Okay, now this particular bank is also very important in implementing the different policies for control, and it also issues currency. All of us are well aware कि central bank होता क्या है. इंडिया का कौन सा है? RBI, right? Then we also have participants like commercial banks. Commercial banks का basic function क्या होता है? Deposit accept करना, loan देना. Then they also offer different financial services to say small business या individuals. तो ये भी money market intermediaries में आते हैं. इनको आप participants भी कह सकते हैं. अच्छा, इसके अलावा वी हैव NBFC. अभी NBFC क्या है? व्हाट एग्जैक्टली डू यू मीन बाय NBFC? NBFC इज नथिंग बट नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी. अब ये होता क्या है? सी, इट्स अ कंपनी दैट प्रोवाइड्स बैंकिंग सर्विसेज विदाउट होल्डिंग अ बैंकिंग लाइसेंस. तो इनके पास बैंकिंग लाइसेंस नहीं होता है, फिर भी ये क्या करते हैं? बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं. जैसे आपने सुना होगा ना, मुथूट फाइनेंस, बजाज फाइनेंस, ये सारी कंपनीज हैं जिनके पास बैंकिंग लाइसेंस नहीं है, फिर भी ये लोग क्या कर रहे हैं? दे आर गिविंग यू सम ऑफ द अदर काइंड ऑफ बैंकिंग सर्विसेज. ओके, अपार्ट फ्रॉम NBFC वी हैव DFHI, विच इज नथिंग बट डिस्काउंट एंड फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया. नाउ द मेन फंक्शन इज टू स्मूथ आउट द शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी imbalances. These people help to monitor those liquidity imbalances and curb those differences. They also have a function of developing a secondary market for the money market instruments. तो ये अलग अलग functions perform करते हैं. They also discount and rediscount bills. Then they underwrite shares. ठीक है, बहुत सारे अलग अलग functions होते हैं इनके. So even they are a participant in the money market. Then you have money market mutual funds. Okay, Securities Trading Corporation of India, and then different PSUs. All of these together, they make up the money market intermediaries, right? Now, I hope all of these concepts are clear. So that's it for this particular video. I'll see you in the next one.